In this module, we shall discuss some important things about factor group computations. Let N be a normal subgroup of G. In the factor group G over N, the subgroup N acts as identity element. We may regard N as being collapsed to a single element, either to 0 in additive notation or to E in multiplicative notation. G over N नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और G ओवर N में जो आइडेंटिटी हमारे पास एलिमेंट है वो N आएगा, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी के साथ कोसेट है. This collapsing of N together with the algebraic structure of G required that other subsets of G, namely the cosets of N, also collapse into a single element in the factor group. A visualization of this collapsing is provided in the figure on next slide. Y is from G to G over N. G over N is a factor group and is the normal subgroup of G. और यहाँ पर जो डार्क लाइंस G में शेडिड जो आपके पास रीजन है वो G को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डार्क लाइंस हैं वो कोसेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो जो यहाँ पे हमने A रिप्रेजेंटेटिव ले लिया फर्स्ट डार्क लाइन के ऊपर, और ये जो A है, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये कोलैप्स हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर AN के ऊपर कोलैप्स हो जाएगी, विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ द फैक्टर ग्रुप G ओवर N. और इसी तरह आप देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव में आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो कोलैप्स हो रहा है N के ऊपर, और ये हमारे पास G ओवर N की आइडेंटिटी है, और अंडर मॉर्फिज्म identity of G would map on identity of G over N. We know this. And B maps on Bn. We are taking representatives in the cosets. और आप देख सकते हैं कि CB जो है वो कोलैप्स हो रहा है CBN के, क्योंकि ग्रुप नॉर्मल है. That's why it is equal to Cn into Bn. अगर ग्रुप नॉर्मल नहीं होगा तो आपके पास कोशेंट ग्रुप नहीं बन सकेगा, वो जस्ट आपके पास एक कोशेंट सेट है और वो ग्रुप की तमाम एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कोसेट्स होल्ड नहीं करेगी तो फिर. और AB is collapsing on the coset containing AB is collapsing on ABN, which is equal to AN into BN, and the coset containing C is collapsing on CN. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CB हमने रिप्रेजेंटेटिव्स लिए दो डिफरेंट कोसेट्स के अंदर, और जब हमने इनका प्रोडक्ट लिया CB विच इज़ एन अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप G, और इनके प्रोडक्ट ने हमें एक और एलिमेंट G ओवर N के अंदर दे दिया जो कि CBN है. इसी तरह A और B के साथ भी हमने किया. A और B दो डिफरेंट एलिमेंट्स थे G के, हमने इनका प्रोडक्ट लिया जो कि आपको एक न्यू और एलिमेंट मिल जाएगा G का जो कि AB है, और AB जिस कोसेट के में लाई कर रहा है वो कोलैप्स हो जाएगा ABN के ऊपर. Recall that Y from G to G over N defined by YA equal to AN. AN is the element of G over N, which is a left coset, and A is some element of G. G is the group.
for A belonging to G is a homomorphism of G onto G over N, we can view the line G over N at the bottom of the figure on the previous slide as obtained by collapsing to a point each coset of N in another copy of G. Each point of G over N thus corresponds to a whole vertical line segment in the shaded portion representing a coset of N in G. It is crucial to remember that multiplication of cosets in G over N can be computed by multiplying in G, और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन G ओवर N के अंदर है वो डील होती है मल्टीप्लिकेशन इन G के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स हम लेते हैं यूजिंग एनी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द कोसेट्स.